Very good evening, everyone. So, I have started a series in which I'll be, um, you know, giving you the short, crisp notes of the chapter present in JD Winter and other, and following the books as well. So, what I would say is ki, okay, the notes are there, but do study the chapter thoroughly. Only then you will be able to relate what is taught over here. And then you will be able to correlate these things. Some things are not mentioned in here, but UPSC exam have already asked that. As for the room problem question was from this chapter only, and I haven't mentioned it in this chapter, but you can read the book, or I can mention it again. So with this I will continue what I have started. So with pyroclastic deposits. So pyroclastic deposits क्या होते हैं? ये एक फ्रेगमेंटल मटेरियल होता है जो कि जब आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, एक्सप्लोजन्स होते हैं, एरियल एक्सपल्जन होते हैं, उसकी वजह से फ्रेगमेंट्स जो हैं जो इजेक्ट आउट होते हैं उसे पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट कहते हैं. क्लासिफिकेशन है फॉल्स. पायरोक्लास्टिक पार्टिकल्स दे सेटल डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, उनको फॉल्स कहते हैं. फ्लो एक डेंस क्लाउड है हॉट गैस का, एंड पायरोक्लास्ट दे जस्ट मूव डाउन स्लोप. सर्जेस इसका सबसेट है. लो डेंसिटी है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ गैस एंड पायरोक्लास्ट. कंपोनेंट्स क्या हैं पायरोक्लास्ट के? इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ वोल्केनिक मटेरियल. टेफ्रा, they are deposited pyroclastic material and further it's classified by the size. इस साइज के ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है. एश इज लेस देन 2 mm. लपीली इज 2 to 64 mm. एक बार किसी ने पूछा था कि 34 mm साइज किस में आता है, सो दैट्स इन लपीली. बॉम्ब्स एंड ब्लॉक्स मोर देन 64 mm. एंड किसी ने शायद इसके ऊपर भी डिटेल क्वेश्चन पूछा था कि बॉम्ब्स एंड ब्लॉक्स के साइज में भी कुछ फ़र्क है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. अदर वॉल्केनिक क्लास्टिक डिपॉजिट. सो ऑटोक्लास्टिक डिपॉजिट्स जो होते हैं कि इट रिजल्ट फ्रॉम द सेल्फ ब्रेकअप ऑफ लावा फ्लोस, लाइक डॉम टेलस होते हैं, ए होते हैं. इट जस्ट रिजल्ट फ्रॉम द सेल्फ ब्रेक. लहाज होते हैं वॉल्केनिक डिब्रिस जो कि वाटर के साथ मिक्स होता है और फिर वॉल्केनिक मड फ्लोस बनाते हैं. पायरोक्लास्टिक फ्लो मैकेनिज्म. So they are generated by the explosive eruptions or hot dome collapse, and they may mix with water, they transforming into lahars and water lake deposits. There are some example. Columbia River basalts, ये एक large fissure explosion है and they form these vast basalt plateaus. Feeder dikes है इनमें, infiltrated flows है, columnar jointing है. Hawaiian lava flows जो हैं they have been demonstrated transition from Pehoho to AA, and they include lava tubes as efficient conduits for transporting lava. Iceland is the only location where mid-oceanic ridge fissure eruptions are subaerially exposed. Flood basalts example are Columbia River, Deccan traps associated with global climatic impacts and crustal sagging due to mass displacement. Now, coming to the pyroclastic deposits overview. So pyroclastic जो हैं they are the result of the explosive volcanic eruption and they form fragments of volcanic material that is pyroclast, and they are categorized based on the origin and depositional characteristics. So pyroclastic fall, flow and surge. जो फॉल था मैंने आपको यहीं पे बताया था, इधर है. फॉल्स आर पायरोक्लास्टिक पार्टिकल्स जो कि एयर से डायरेक्टली सेटल होते हैं. ये डेंस क्लाउड होता है हॉट गैस और पायरोक्लास्ट का जो डाउन स्लोप ऐसे ऐसे करके मूव होता है, एंड सर्जेस उसका जो है वो सब टाइप है. सो पायरोक्लास्टिक फॉल डिपोजिट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉल आउट फ्रॉम द एक्सप्लोसिव जेट और eruption plumes. Pyroclasts are either forcefully ejected upward or carried aloft by the convection from the hot gases above the vent. Plinian eruptions जो होते हैं they are involved in powerful jetting followed by the convect lift. So Plinian volcanoes are example of fall deposits that may also come in future. The thing is कि as एग्ज़ाम का जो लेवल है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है. बेसिक क्वेश्चंस हम सब कर लेते हैं the help of PYQs available. So now they are increasing the level by getting into more detail, and detail इन्हीं से आएगी. Characteristics well sorted deposit होते हैं and their grain size decreases vertically topward and laterally away from the source. तो अगर ये आपका वोल्केनो है, इससे इरप्शन हुए आपके फॉल डिपॉजिट्स का, तो उसका जो ग्रेन साइज़ है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो डिक्रीज़ होता रहेगा वर्टिकली, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते रहेंगे तभी उसका साइज़ डिक्रीज़ होता रहेगा. थिकनेस किस पर डिपेंड करती है? एक्सपल्जन रेट क्या है, वॉल्यूम इरप्टेड क्या है, एक्सप्लोजन फोर्स क्या है, एंड विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी.
Deposits mantle the surface and are independent of topography. They are rarely welded due to cooling while suspended, except near the vent. The examples are Mount St. Helens. Ash plume rose to 25 kilometers in 13 minutes, and they have deposited the ash of 1 centimeter thick as far as 500 kilometers. Mount Mazama is a crater lake and deposited covered 7 US states and parts of Canada. Long Valley eruption almost 7 lakh years ago, and they have the ash of 1 meter thick over a 75-kilometer radius and devastation over 120-kilometer radius. Longevity. So thinner ash blankets erode quickly in subaerial environments and concentrate in lowlands or in water bodies. Pyroclastic flow deposits. So they are dense, they are ground hugging clouds. Like this is the इस तरीके से आपके फ्लोज होते हैं. There's a ground hugging clouds of hot gases and pyroclast. Now we have the mechanism. Just a minute. Yeah. So we have the mechanism collapse of Plinian columns like Mount St. Helens का collapse जो है वो इसका mechanism. And little blast थे आपके Mount St. Helens के gas charged magma fontaining, gravitational collapse of lava domes and perched deposits. Characteristics. So they have been controlled by the topography and they are concentrating in valleys as well as in depression. Extremely hot they are, and the velocity is almost 50 to 200 kilometer plus. Deposits range from centimeter to hundreds of meters of thick and can cover up to 45,000 kilometers square. Ignimbrites are the pumice rich flow deposit. This is the question that might come कि ignimbrites क्या है, rock types में है. They are the pumice rich flow deposits. Block and ash deposits, they are unvesiculated class from dome collapse. Vesicles is the cavities. So unvesiculated class. Depositional structures, they are often massive but may show stratification, grading, cross bedding, erosion surfaces. Denser lithics concentrate at the base and lighter pumice is at the near top. Welding, lower portion may be welded into welded tuff due to high heat. Like all gas gets out and they just all get welded it together. Flattened pumice is known as fiamme and they form due to compression. So ये भी आ सकता है कि fiamme क्या है. So Mount Vesuvius, buried Pompeii and Herculaneum. Pompeii में 79 AD में जो हुआ था वो माउंट वेसुवियस की वजह से हुआ था. पोम्पाई की आपको हिस्ट्री अगर आप पता होगी तो यू विल बी एबल टू नो. पहले एक पायरोक्लास्टिक फ्लो खेला जिसके अंदर 28,000 लोग जो हैं वो मर गए थे और ओनली 2 सर्वाइवर्स वर देयर. लॉन्ग वैली इग्निमब्राइट 1500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया था with tens and hundreds of meters of deposit thickness. Hazards, extreme heat and velocity make them deadly with widespread destruction. Now we have pyroclastic surge deposits. So formation is the result from the low density turbulent and gas rich flows. They have the low density and that are turbulent, and they have the gas rich flows. Characteristics: low density, high velocity. Surges allow surges to mantle topography while concentrating in low areas. Lose momentum quickly, accumulate near the vent. Deposits are stratified and they show current bedding features like dunes and anti-dunes. Fact है, इसको आप याद करिए. Differences from flows: less particles concentration compared to pyroclastic flows. Greater turbulence in transport. Comparing pyroclastic deposits. Gradation. Pyroclastic deposits often shows characteristics of multiple types. Fall, flow, surges. Example: a deposit may begin with a surge followed by a flow and then end with ashfall melting. सो वी आर कंपेयरिंग पैराक्लास्टिक डिपॉजिट्स. ग्रेडेशन क्या होता है? एक पैराक्लास्ट डिपॉजिट जो है वो ऑफन मल्टीपल टाइप्स की करेक्टरिस्टिक शो करता है. उसमें तीनों होते हैं, फॉल भी होता है, फ्लो भी होता है और सर्ज भी होता है. एक डिपॉजिट सर्ज के साथ शुरू होगा, फिर फ्लो होगा एंड देन फिर एश फॉल मैंटलिंग होंगे. प्रोग्रेसिव एग्रेडेशन. डिपोजिशन अकर प्रोग्रेसिवली. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन एंड फ्लो बाउंड्री जोन. देर इज अ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल कंसनट्रेशन एंड वेलोसिटी वेरी स्पेशली एंड टेम्पोरली. Large particles may roll and saltate into a place rather than settling to the suspended mass. And deposits reflect episodic heterogeneous events. They are influenced by the magma composition and volatile content, and changes in eruption dynamics as deeper magma chambers levels are tapped. Key terms: ignimbrite. Ignimbrite are deposits from pyroclastic flows and they are often welded. Welded tuff, harder from the welding of hot pyroclastic fall deposit. Fiamme is the flattened pumice fragments in welded tuff. Phoenix cloud is a buoyant ash gas cloud rising above pyroclastic flows, and isopachs are the line of constant thickness in deposits. Example: ashfall deposit. Okay, so we have next topic we have of we'll cover in the next part.